2, 3 and go. 35 मारा जा इस किले के अंदर है। এটা হচ্ছে একটা গরু। तो आप हमारे देवता समान, आपका वेलकम सो केसरी बालम पदार्थ हमारे देश। तो आप हमारे देवता समान, आपका वेलकम सो केसरी बालम पदार्थ हमारे देश। Padharo Mare Des aren't just lyrics or a random folk song. It is a commotion that resonates with every Rajasthani heart. For the people of Rajasthan, the music and dance are in the part of their blood. Rajasthan's residents have an intriguing passion towards their folk music that has been deeply weaved in their souls. Folk dance and music may differ from province to province, however, they all have one thing in common: a timeless charm that radiates Rajasthan's majestic culture. It's important to know the characteristics that best identify them and set them apart from others. For example, they can only be performed by those skilled in this art. Many of them, like Ghumar and Kalbelia, have already achieved international recognition. These are tribal dances that have come down the ages and have still retained their popularity. The folk songs sung while dancers perform are ballads that narrate mythological stories or heroic deeds, or are religious songs. The rich and vibrant culturescape of Rajasthan includes many dance forms, each special and unique. Each of them also brings a lot of cheer and happiness to those performing them and to the audiences. Rajasthani folk music is a global phenomenon, and it has taken the world by storm. And frankly, the credit for its popularity cannot go to a single person, but to all the artists from every part of this princely province. The folk dances of Rajasthan are events to witness and cannot be missed when you are in Rajasthan. सुर मेरे वालोरी नबाबे जोड़ी रंगी बाबेलनी। The morning view of the Thar Desert is just like this. अरे ताला नहीं यही तो सामने ताला है।
Jaisalmer gave us the experience of our childhood fantasy, Sonar Killa. Thar gave us our first thrilling experience in a desert safari. With all these memories inscribed in our heart, we moved on in search of new experience and adventure. Now we were heading back towards Jodhpur by modifying our trip, driving extra hours and burning extra fuel just for only one reason, Mehrangarh Fort. This fort has so much popularity that we made it a point to get back at Jodhpur to be able to witness it after being disappointed on the second day of our trip. We shared it in the episode 2 of this series. If you have closely followed the series, then you would know that we were here on a Sunday and this magnificent fort was closed due to weekend lockdown in Rajasthan. So with such high hopes, we finally headed towards Jodhpur to explore one of Rajasthan's best preserved assets. এটা হচ্ছে একটা গরু, কেউ যদি না দেখে থাকেন দেখুন। আর এটা একটা ছোট গরু। আমরা চা খেতে এসেছি অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পর, মোটামুটি টানা 3-4 ঘন্টা। আলটিমেটলি চা খেতে দাঁড়ালাম। এরকম ধাবা পুরো রাস্তা জুড়েই ছোটোখাটো ধাবা আছে, এবং একটা জিনিস খুবই কি বলবো, অনেকের কাছে শুনেছি যে ননভেজ পাওয়া যায় না, বাট এখানকার ভেজ খেয়ে দেখার মতন। আমরা বাঙালিরা সেরকম ভেজ বানাতে জানি না, মানে ননভেজ আপনারা মিস করবেন না যদি আসেন। हेलो, क्या नाम है तुम लोगों का? नींबू। और तुम? हाँ, मगारम। और तुम? संगारम। दांत कहाँ गया? ये दोनों का दांत गायब। कौन लेके गया? क्या नीचे भी 2 गायब, ऊपर भी गायब, इसका भी ऊपर का गायब। यार मुख खुल से ना, मुंह बंद कर। हाँ, আমরা কোত্থেকে এসেছি? हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बंगाल से आए हैं। हाँ, आप लोग यहीं पे रहते हो? अच्छा। हम लोग का गांव 2000 किलोमीटर दूर है। हाँ, पोटल सा ही गाँव, इधर से ही कुछ घर है। अच्छा, तो खेती बाड़ी करते हो क्या? यहीं पे खेती है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? सही। हाँ, अब तो तो बंद है स्कूल। चलो कोई नहीं, स्कूल भी खुल जाएगा। একদম পুরো বিশ্রাম পজিশন। চলো, ওই দেখ ভেতরে একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, পালিয়ে গেছে ভেতরে। ঠিক আছে, চলো টাটা টাটা। কি মজা পেয়েছি ওরা, দেখ। টাটা। यहाँ पे कैनन बोल्ट साइन लगे थे ये, हाँ, तोप के गोले के निशान है जो जयपुर आर्मी ने जोधपुर के ऊपर अटैक किया था 1808 में। तो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली कैनन हिट किया था, लेकिन दीवार इतना चौड़ा था कि वो टूट नहीं पाया।
जोधपुर वर्सेस जयपुर. For over 5 centuries, Mehrangarh Fort has been the headquarters of the senior branch of Rajput clan known as the Rathors. The foundation of the fort was laid during the reign of the 15th Rathor ruler Rao Jodha, who is also the founder of Jodhpur in 1459. The entire structure is surrounded by walls that are 117 feet long and 70 feet wide. At some places, the walls rise up to a height of 120 feet, which enhances the beauty of the overall structure. However, the purpose of this elevation was to ensure the safety of the people living within the premises back then. Mehrangarh Fort stands 100 feet in splendor on a perpendicular cliff, 400 feet above the skyline of Jodhpur. मारवाड़ सुना आपने? मारवाड़ी. ये मारवाड़ है. फिर बाद में एक पहला राजा आया राव जोधा. उसने इस किले की नींव रखा 1459 में और शहर का नाम रखा जोधपुर. फिर राव जोधा ने जब नींव रखी तो बताते हैं कि यहाँ पे एक नर बलि जिंदा आदमी को भी नींव में दिया गया, लेकिन बाय फोर्स नहीं था, वो सेक्रीफाइस था. ये जो जगह शहीद राजा राम मेघवाल स्मृति स्थल, ऐसा इसलिए करते थे, ऐसा करने से उस किला है वो अजय बनेगा. ऐसे किले का जो फाउंडेशन शुरू किया गया था और उसका जो पहला गेट है, फंसा का मतलब है पहला गेट, तो यहाँ अच्छा. लकड़ी के बैरिकेड्स डाल के और यहाँ दरवाजा बनाया था. फिर बाद में 35 महाराजा इस किले के अंदर, उसके बाद जनरेशन में जो जैसे जैसे महाराजा आते रहे और 35 महाराजा इस किले के अंदर रहे, यहीं से वो पूरे मारवाड़ को ऑपरेट करते थे. मुगलों के साथ में इनके जो संबंध है वो मैत्री संबंध है. वेलकम कलकत्ता. मैं मांगला कौन गाट सुनाऊं? हाँ एकदम. वेलकम कलकत्ता. ये बोली ओ नो नदी, ये बोली ओ नो नदी अर्ध. The current head of the Rathor clan and custodian of the fort, Maharaja Gat Singh II, has preserved the buildings and developed the museum as a record of the lives of his predecessors. His ancestors ruled the state of Marwar and over many generations built this architectural treasure. And it falls to him to ensure that their legacy is maintained and understood. अभी जो आप जिस कोर्टयार्ड में खड़े हैं, ये राजा का राज अभिषेक वाला कोर्टयार्ड है. जब भी नए राजा बनते थे तो ये जो मार्बल सीढ़ी है इसके ऊपर वो बैठा के राजा का राज अभिषेक होता था. पहले पर्दा सिस्टम था तो लेडीज लोग यहाँ पे अलाउ नहीं थे, सिर्फ जेंट्स लोग यहाँ पे होते थे और रानियाँ ऊपर से देखी. ये सारे ऊपर वाला जो है झांकी महल है. आपको ऐसा लग रहा है जैसे वुड के ऊपर कार्विंग होगा, लेकिन वुड नहीं है, सारा जोधपुर का रेड सैंड स्टोन है और टोटली हैंड कार्विंग है. ठीक है, हर एक जाली का अलग डिजाइन भी है. और जो लास्ट यहाँ पे जो राजा का राज अभिषेक हुआ है 1952, जो प्रेजेंट महाराजा गज सिंह जी, उनका भी राज अभिषेक इसी मार्बल सीट के ऊपर था और वो जो उस टाइम सिर्फ 4 ईयर्स. ये जो रूम है इसके अंदर जितने भी रखी है सब हाथी के ऊपर रखने वाली अम्बाडीज है. अच्छा, एलिफेंट होता बोलते हैं इनको. आगे राजा बैठते, पीछे उनका बॉडीगार्ड बैठता था. वुड का बना हुआ अंदर और मेटल प्लेटेड है, किसी के ऊपर सिल्वर प्लेटेड है. जब मायके जाती थी तो उसके लिए ये स्पेशली लेडीज के लिए. और ऊपर जरदोजी, जरदोजी जानते हैं, फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है सोने का काम. तो जरदोजी आर्ट है, अंदर है रेड थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की आवाज है. अंदर की साइड ऐसे लग रहा है जैसे प्रिंट है. तो हैंड कार्विंग.
सारा हाथी होता कलेक्शन, तो ये इसमें पालकी कलेक्शन। पालकियाँ जब राजा रानी कोई भी जैसे शॉर्ट जर्नी होता था, इसमें पालकी के लोग कंधे पे उठा के और उनको एक दूसरे से शहर के अंदर निकलते तो लोगों को पता चल जाता कि इसमें रानी बैठी हुई, तो इसलिए लोग इस साइड में हो जाते, जेंट्स लोग। ये 300 ईयर ओल्ड पालकी गुजरात की बनी हुई है, उसी समय के मिरर वगैरह जो इसमें लगे हुए थे। अभी बहुत सारे मिरर इसमें से निकल गए, लेकिन जब ये नया था तो बहुत खूबसूरत था। इधर स्पेशल जाली बनी जिससे वो अंदर रोशनी आती थी। देखिए और छोटा दिख रहा है साइज में, तो हमारे यहाँ पे पहले आपको पता है बाल विवाह की प्रथा थी, 13-14 साल 14 साल में शादियाँ हो जाती थी। As the main deity of the Rathod was sun god, so the fort was named as Mehrangarh, where Mehran means sun and Garh means fort. इसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है मैडम। इसके नीचे और बरसात का पानी है यहाँ पे। किले की सबसे बड़ी पालकी, सबसे बड़ी पालकी है, महाराजा खुद यूज करते थे और इसको 12 आदमी कैरी करते थे, 6 फ्रंट साइड और 6 बैक साइड से। तो शादी के समय लड़की वालों के मेन गेट पे लगा दिया जाता है। जब दूल्हा बारात लेके उनके घर पे पहुंचता है तो पूरी बारात वहाँ पे खड़ी रहती है, दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ाया जाता है और इसको 4 टाइम टच करते हैं। अच्छा। गणेश और गुड लक के लिए उसको हमारे यहाँ पे तोरण का सलाम खाया जाता है और ये दूल्हा और दुल्हन के सिर पे बांधते हैं शादी के समय तक, जब तक फेरे नहीं होते, अग्नि फेरा, उससे पहले हमारे यहाँ पे लड़का लड़की आपस में देखने का पाप मानते थे। इसलिए जो ये डिवाइडेशन है कि फेरे में बैठेंगे तभी जो है एक दूसरे को नहीं देखेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही है। स्ट्रेट सोर्ड है तो इंडियन कॉन्सेप्ट है। और जब मुगल आए तो अपने साथ में कर्व्ड कॉन्सेप्ट लेके कर्व से, ये यहाँ के जोधपुर महाराजा अजीत सिंह जी की ओरिजिनल तलवार है जिसके दोनों तरफ ब्लेड है, राइट लेफ्ट यूज कर सकते हो। और बैनट जानते हैं बैनट क्या होता है? बैनट के सामने लगा हुआ है, बंदूक के सामने लगा हुआ, बैनट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बनी हुई तलवार है जलालुद्दीन, ठीक है, और कुछ नहीं करते, जैसा जो मेटल है वैसे ही वैसा बना है। ये अलग अलग मिक्स मेटल होता था और उसको गर्म करते थे और तेल के अंदर ठंडा करते थे। अच्छा, इसीलिए इसका जो कलर आया है ब्लैक आया हुआ है, और इसमें कभी जंग नहीं लगेगी। वर्क दिख रहा है, ये सिल्वर वायर है और वायर को हाथ से वीव किया हुआ है ऊपर तक। सिंगल आदमी नहीं हो चुके, एक आदमी को 2 आदमी चाहिए एक साथ दोनों को यूज करने। जब महाराजा लोग यहाँ से आउट जाते थे तो अपने सामने बहुत बड़ा टेंट है जिसके अंदर सब लोग उसके अंदर आ जाए। तो स्पेशली जो राजा के लिए जो होता था उसके अंदर ये टाइप का एम्ब्रॉयडरी आर्ट किया हुआ है, ये सिल्क थ्रेड है
और एम्ब्रॉयडरी पूरा उस समय ब्लॉक प्रिंट है और ये कुछ था नहीं, तो सारा जो है हैंड कार्विंग ये फुल महल जो एंटरटेनमेंट हॉल था, जो राजा के कुछ संगीत वगैरह कुछ प्रोग्राम है वो इसी रूम में होते थे। राजा का बैठने के लिए साइड में उनके गेस्ट या कुछ प्रिंस आते थे, वो बैठते थे। Burnished red sandstone, imposing, invincible, and yet with a strange haunting beauty. Much has been written about the citadel of the sun, for truly it is one of the most impressive in all Rajasthan. So colossal are its proportions that Rudyard Kipling called it the work of giants. Today, it is acknowledged as one of the best preserved fort in India. और इधर देखिए ये वाला, इसमें 3 कटानी एक साथ में, 1 2 3, इसके हैंडल के अंदर स्प्रिंग है, उसको पकड़ के टाइट करेंगे धागे से, एक हो जाएगा, मार के जब छोड़ेंगे अंदर जाके फट जाएगा। एक शॉर्ट के साथ में पिस्टल भी दिया छोटा सा, अच्छा 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 अच्छा। शॉर्ट है और उसमें ट्रिगर लगा हुआ है। The fort and its palaces were built over a period of 500 years. As a result, the varied building styles of many different periods are represented, including the 20th century. The abrupt transition from one era to another as you progress through the buildings is one feature that makes a visit so remarkable. कॉन्फ्रेंस हॉल है, राजा सूर सिंह थे जिन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल की, राजा वहाँ बैठते थे, मंत्री लोग आगे बैठते थे, और जिस राजा ने इस रूम को बनाया उनके 5 रानियाँ थी, तो रानियाँ भी मीटिंग में शामिल होती थी, उनकी जो एडवाइजरी वो मानी जाती थी। तो रानियों को बैठने के लिए ऊपर झरोका दिख रहा है, अच्छा, जिसमें लाइट जी, उसके पीछे एक गैलरी है जो रानी रूम से कनेक्टेड है। जो रानी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती थी, रानी वहाँ उसके पीछे बैठ के सभा सुनती थी, और राजा के लिए कोई मैसेज होता था, अटेंडेंट के द्वारा नीचे मैसेज पास करता था। In those unstable times, a fort like Mehrangarh was an object of great power and prestige. In today's terms, it would be rather like owning an aircraft carrier. Its uses, perhaps, were somewhat more varied. It was not just a military base, but also a palace for the rulers and their wives. A center of patronage for the art, music, literature, and with its many temples and shrines, it was also a place of worship. These diverse uses are reflected in many buildings within.
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आराम से बैठ। By this time, we felt a sense of victory as we had managed to include this fort into our itinerary despite initial setback of lockdown on a weekend. To return to Jodhpur just to witness the grandeur of this fort all seemed worth it. With this, episode 5 of the Rajasthan series comes to an end. And if you like our videos, please subscribe. We'll be back again with the next episode of the Rajasthan series soon. Till then, stay happy, stay safe. Goodbye.